So, good evening, YouTube. After 2 days, I'm again live. I was not able to, hold the session, but today we have. So, let's see who joins. The first one is Simi, ma'am. Good evening. How are you, ma'am? Good evening, Divyanshi, ma'am. How are you? Good evening, Pooja, ma'am. How are you? I'm good, thank you. And how are you all? And good evening, Rohan, sir. How are you? So, how was your Holi? Because after Holi, it's the first session. So, how was your Holi? My Holi was good. It was, in the beginning, I was not, I had already told that I wanted to go to Pushkar, but because of some reasons, I couldn't go to Pushkar. Uh, so, I was at my home only. And good evening, Mohit sir. I'm good, thank you. And how are you? But good evening, Priya ma'am. I'm good, thank you. And how are you? Same. My Holi was also not planned. It's what the plans were didn't work out. So my Didi and Jiaji came my home and they put a lot of kulal in my hair, on my face, and that's all. And then I went to my relatives' place to meet them. So I met them. I wished them. After that, I came. I took a bath, and you know, then I slept for 2 3 hours, and that's all about my Holi. But yes, next day of the Holi, I went to Hawa Mahal. You must be knowing it's a beautiful place, but in Rajasthan nowadays it's very hot. So it was very hot, but I was there for 3 hours, and was good experience altogether. And it was my first time, when I visited Hawa Mahal, because before that I had never visited Hawa Mahal. Anyways, you guys tell me about your Holi now. You are there, so I just want to hear from you that Rohan sir said that he enjoyed Holi a lot. Good evening, Kabira ma'am. I'm good, thank you. And how are you? I enjoyed Holi. I went my mom home, then I went farmhouse and played Holi. Oh, that's great. I saw your son's video. He's on like he's standing on a I think he's standing on your car's bonnet and he's dancing on any Hindi song. It looks very cute in that. I'm so sorry. Sounds good, Kabira ma'am. Good evening, Yashi ma'am. How are you? And yes, I just want to, Sudhir sir, good evening. I'm good, thank you. And how are you? Priya ma'am is saying my Holi was amazing. I didn't play Holi. Okay. Huh? You must have had gulab jamun, a lot of gujiyas, and good evening, Sanidhya sir. I'm good, thank you. And how are you? After that, we bath in tube well. Okay. My day was productive. Okay, Sanidhya sir is saying, please like the video. Thank you. It's so kind of you, Sanidhya sir. It's so caring of you that you are asking everyone to like the video. Anyways, it's everyone's choice, whether they should like or not. It's a matter of
Mohit sir is also asking. It's fine. It's fine. Thank you so much for your kind request to like the video. People, you haven't had dinner, have you? Yeah, I haven't had dinner yet. Unfortunately, today, like my mom was not feeling well. So all of a sudden, first time it happened that her, blood pressure increased and it was too much. So I had to go to hospital. I had to take her to the hospital, and my evening was not very pleasant. I would say I was really scared because first time I saw her, she has some problems, but it's fine. With the old, I think she's getting older. So, oh, thank you so much, Mohit sir. So, yeah, she was there for 1 hour. The doctors in the emergencies saw, and I daily wear this gold chain, Mohit sir. I think sometimes it is not seen, but today it is seen. I guess that's why you have noticed it. Sounds good. So it was a bit frightening, and but now thank God she is fine, and she's sleeping. But tomorrow again I will take her to the military hospital, and I want to get a lot of just want to get a lot of you know tests, because that is very important. Yeah, she will. I think she has got a very strong will, so she will overcome all the problems. But yeah, sometimes we can't help it. Being positive is there. We have to be. So it's 10 o'clock. Time to start today's session. Before I begin today's new words, I just want to tell some very important things to all of you, that from the next session, from the next class actually. I'm not sure whether I will take it to tomorrow or not. जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मेरा जब भी सेशन होगा, so I just want to start it just 2 minutes before, because sometimes I guess like I start 10 minutes before, और वो जो 10 मिनट होते हैं मेरे, ये इन 10 मिनट्स में बेसिकली मैं ये चाहता था कि आप में से जो लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं, आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर टाइम to tell about it, but I have noticed it from last some classes that even जो ये 10 minutes हैं, इसमें भी like not any productive things happening. You're just telling me about your how are you, and my day was productive. You don't write a lot. What I always want, that मेरा मेन मकसद यही है कि 10 मिनट पहले आने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप में से जो लोग मुझे पहले ज्वाइन कर लें, यू स्टार्ट, डोंट वेट फॉर माई क्वेश्चंस. If I'm asking you how was your day, please tell me more and more, because when you write more, it means you practice more. आप अगर मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दे रहे हो, so it's not working that way. So मेरा ये मकसद था, बट हाँ, जहाँ तक नए वर्ड्स एंड नई ग्रामर के बारे में अगर हम लोग बात करें या प्रैक्टिस की बात करें, वो तो मैं 10 बजे शुरू करता हूँ. सो यस, आई विल जस्ट वांट टू स्टार्ट एट 10 o'clock से पहले ही मैं आ जाऊँगा. फॉर अ मंथ और टू आप में से कई लोगों का डेटा भी बच जाएगा. No issues, no problem. So just let's go ahead. So the first thing I just want to talk about today's जो आज का पहला शब्द है, it's a beautiful word. और अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूँ, शायद पोहा, नमकीन, गुजिया. नाउ इट्स नॉट द टाइम टू टेल मोहित सर प्लीज, थैंक यू. अभी 10 बज के 2 मिनट हो रहे हैं, है ना. सो मीन्स 10 o'clock आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट्स टाइम टू, जो 10 बजे के बाद है वो तो सेशन शुरू हो जाता है. 10 बजे से जो पहले का टाइम है, इट्स फॉर यू टू टेल मी मोर एंड मोर अबाउट योर डे. एक्चुअली व्हेन यू प्रैक्टिस, when you tell me about your day, अभी जैसे आप होली की बात कर रहे थे या जो भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, you know, I just want to say that कि आप क्या करते हो,
आप सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस करते हो क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, आपकी हर बार सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस हो रही है एंड आई वांट इट। एंड जितने ज़्यादा शब्दों को आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कैसे करोगे, जब तक आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप लिखोगे ज़्यादा नहीं, हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स। तो मेरे साथ में तो ये है कि मैं अभी आपके साथ में एक वर्ड दे दूंगा, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू, इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेजल वर्ब दैट इज बट फॉर समथिंग एक्चुअली। तो लो, मैंने आपको दे दिया, नाउ आई विल टेल यू दिस, ठीक। अब बट फॉर समथिंग, इट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेजल वर्ब। इट शोज, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो, वैसा आई थिंक आपको पता होगा, बक मतलब मनी के लिए वर्ड यूज करते हैं, बक, है ना। हमने बोला था, जैसे मैंने अगर कहा है कि इट इज 5 bucks, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 5 रुपए के बारे में बात हो रही है। फाइन, सो बक फॉर समथिंग, यहाँ पे बक जो वर्ड है वो एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। बक, बक्ड, बक्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब बक फॉर समथिंग का मतलब है टू ट्राई वेरी हार्ड, किसी चीज के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर इंग्लिश में आप बक फॉर समथिंग यूज कर सकते हो। जैसे आई हैव सीन सो मेनी पीपल कहते हैं, एक कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश और एक कहते हैं एडवांस्ड इंग्लिश। तो यस, इसी में बात करते हैं। एक सिंपल इंग्लिश जो जानता है व्यक्ति वो यही बोलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इज दैट आप में से बहुत सारे लोग अपनी रियल लाइफ से इस चीज़ को कनेक्ट करके बता सकते हो, बट राइट नाउ आई होप आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि विमेन वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, ठीक है। और उसमें जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, अब या तो हम उन सब के लिए क्या बोलें, ऑल द टीम्स आर ट्राइंग हार्ड टू विन, या तो हम ये बोले ट्राइंग हार्ड, या फिर हम इसको इससे चेंज कर देते हैं दैट ऑल द टीम्स आर बकिंग, बकिंग आईएनजी लग जाएगा, ऑल द टीम्स आर बकिंग फॉर द विन, फॉर द विक्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से बक फॉर समथिंग होता है। जैसे समटाइम्स यू कैन से दैट यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ योर क्लास, सो कैसे बोलोगे, जैसे अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अब क्लास के टॉपर बनने के लिए, तो आई थिंक सेंटेंस जो मैं बता दूं वो ये होना चाहिए कि आई एम वर्किंग फॉर, अब टॉपर के लिए नहीं, फॉर बीइंग द टॉपर। ये जरूर ध्यान रखना, टॉपर बनने के लिए, बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। फॉर इज अ, आई वर्कड फॉर साइकिलिंग इन माय चाइल्डहुड, ठीक है। साइकिलिंग के लिए आपने बहुत बहुत मेहनत की है, इसका मतलब आई एम वर्किंग फॉर। तो अगर आप किसी काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप आईएनजी जरूर लगा देना, दैट आई एम वर्किंग फॉर बीइंग द टॉपर ऑफ माय क्लास, ठीक। ये उन लोगों के लिए सेंटेंस बन गया जिन लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए कि मैं अपनी क्लास में टॉपर बनने के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत सीरियस मैटर में हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, दैट दैट डॉक्टर इज बकिंग फॉर सेविंग द लाइफ, ठीक है। अब वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंसान लोग बोल सकते हैं आई एम बकिंग फॉर लूजिंग माई वेट, ठीक है। सो यस, इफ समवन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू लूज द वेट, तो फिर आप वहाँ पे ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम बकिंग फॉर माई एग्जाम्स, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। थोड़ा सा समझो, आप किस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं somebody इज देयर और उनको प्रमोशन चाहिए, सो वो इंसान बोल सकते हैं आई एम बकिंग फॉर माई फॉर द प्रमोशन, आई एम बकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, आप ये बोल सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, सो आई एम वर्किंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एग्जाम्स के लिए थोड़ी ना आप मेहनत कर रहे हो, आप एग्जाम्स को अचीव थोड़ी ना करना चाहते हो। ये तो समझो आपकी कहना क्या चाह रहा हो, वर्क फॉर समथिंग का मतलब है जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो। इन ऑल द टीम्स आर वर्किंग फॉर द विक्ट्री, नॉट फॉर द वर्ल्ड कप, दे आर वर्किंग फॉर द विक्ट्री, फॉर द
मतलब वर्ल्ड कप इन द सेंस फॉर द ट्रॉफी, तो जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, नॉट सो इस चीज को समझिएगा, दे आर किस चीज के लिए, उस चीज का आपको नाम लगाना है, तो आप एग्जाम्स के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम्स के आगे की चीज के लिए कर रहे हैं एग्जाम्स, जैसे मैंने कहा आप टॉपर बनने के लिए हो सकता है मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, आई वर्कड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स, I work for my goal. So trying hard to like achieve your goals. Yes, you can say that. I'm working for a government job. Are you really? अच्छा मैं आप लोगों से ज़रूर कहता हूँ और ये बिल्कुल पूछना चाहिए दैट कि हमें why we are actually working for a government job, because all the government departments में जाओ तो फिर situations are very critical. Like today I went to government hospital and इमरजेंसी में था, मैं अपनी मॉम को दिखा रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि प्लीज, एंड द गाइज आर ऑन देयर मोबाइल फोन्स ऑन द वीडियो कॉल्स, दे वर टॉकिंग अबाउट आपकी होली कैसी रही, दैट्स व्हाई वी आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाहते हैं कि हम बैठ जाएं, हमको एक तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाए, एंड फॉरगिव माय लैंग्वेज बट इट इन्फिरेट्स समटाइम्स। सो मन में बहुत ख्याल चल रहे थे इस तरह से कि फिर हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चलो, है ना, मतलब प्राइवेट में ही है, फिर गवर्नमेंट में मतलब कोई अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहते कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजो बच्चों को, वी वांट टू सेंड देम टू द प्राइवेट स्कूल्स, गुड प्राइवेट स्कूल्स। Once this is a very a big question sometimes. I just think, and that's what I never wanted to be in the this particular job. So because you are you I don't know why people looking for, for this. So she is working for being an IAS officer. So being an IAS officer आप बिल्कुल बोल सकते हैं। Nawazuddin Siddiqui bucks for his own identity in Bollywood. Yes, they're not he only. Even some days back, I was watching Mr. I forgot his name. Is one of my very, you know, I like him very much, Mr. Tripathi, Manoj Tripathi, I guess. So उनके बारे में भी देख रहा था, तो कई बार बहुत अजीब सा होता है क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रगल करके यहाँ तक अचीव किए, बट स्टिल लाइक लोग उनसे जब ये पूछते हैं कैसा लग रहा है अब आपको, तो उन्हें लगता है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सफलता हासिल करना मतलब जो लोग ऑलरेडी बहुत अमीर सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, तो उनके बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये लोग सक्सेसफुल लोग हैं, तो इनके लिए तो या सॉरी पंकज त्रिपाठी जी या दिव्यांशी त्रिपाठी ना, सो सरनेम्स आर सेम, so Tripathi ji. So I hope you. So that's all. Thank you. So well, I was just talking about it, and I just carried away. So I let get back to the topic. फिर से आ जाते हैं और उसमें बात करते हैं बग फॉर के बारे में था। नाउ द नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, दैट इज पास ऑन। अगेन इट्स अ फ्रेजल वर्ब, पास ऑन। इसके इंग्लिश में बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है और दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। पास ऑन का पहला मतलब, अगेन इट्स अ फ्रेजल वर्ब, पास ऑन का एक पहला मतलब होता है टू डाई, यानी कि किसी इंसान या किसी चीज की जब मौत हो जाती है तो फिर पास ऑन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हैं। और जब आप पास ऑन यूज करेंगे तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप किसी के मौत की खबर बताएं या सुने या कहीं पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान रखना कि जहां पर डाई वर्ड यूज होता है इट्स वेरी डायरेक्ट। मतलब किसी ने अगर ये बोला, जैसे मैंने मान लो अगर मैं कहूं कि माय फादर डाइड इन 2006, सो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप, मैंने डायरेक्ट बोला, इट्स नॉट मोर पोलाइट। बट अगर आप बहुत पोलाइट होके बोलना चाहते हैं, किसी इंसान की मृत्यु के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप डाई वर्ड को हटा दीजिए, स्पेशली एक्सपायर वर्ड को हटा दीजिए। अब वहां पे जाकर यूज करिए पास ऑन वर्ड को, और पास अवे भी यूज होते हैं। दो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मृत्यु के लिए आप यूज कर सकते हो, पास अवे भी यूज कर सकते हो और पास ऑन भी यूज कर सकते हो। तो माई फादर पास्ड ऑन in 2006, he
पास्ड ऑन। तो ही पास्ड ऑन का मतलब समझ जाइए कि ही डाइड। सो जब डाइड बोलेंगे, ही डाइड, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पोलाइट तरीका नहीं अपना रहा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ही पास्ड ऑन, तो इसका मतलब है कि मैं एक पोलाइट तरीका अपना रहा हूँ किसी इंसान या किसी कोई भी ऐसी चीज़ जो सांस ले सकते हैं, लाइव जो भी होते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। सो व्हेन दे डाई, इसका मतलब है कि डाई को हटा दो, उसकी जगह पास ऑन वर्ड को ज़्यादा यूज़ करें। सो इट इज़ मोर, अगर मैं कहूँ तो पोलाइट है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने, जैसे माई डैड पास्ड ऑन इन 2004 एंड माई मॉम पास्ड ऑन इन 2011। I do feel for you, Simi ma'am, but sometimes we can't help it. No one can fight the destiny and everyone has to pass on. देखो मैं कह रहा था अभी, my नानी passed on in 2011. Oh, okay. So we all people have lost our near and dear ones. सो हम में से बहुत लोगों ने हैं जिन्होंने अपने करीबी को खोया। कोई नानी है, कोई दादा है, दादी हैं, हमारे फैमिली में भी कोई और बहुत क्लोज रिलेटिव, जैसे आई लॉस्ट माई, जिसमें अभी बता रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत पास्ड ऑन इन 2020। यस, जैसे दिव्यांशी मैम ने कहा, सुशांत सिंह की बात कर लीजिए। एक और व्यक्ति हैं, सिद्धार्थ के बारे में आप बात कर सकते हैं, वॉज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ बिग बॉस। सो नाउ ही इज ऑल्सो नो मोर। सो ही पास्ड ऑन सम डेज बैक की अगर आप बात करें तो म्यूजिक वर्ल्ड में दो बहुत लेजेंड्स की अगर हम बात करें, सो दे पास्ड ऑन। डू यू नो हु पास्ड ऑन? माय बुआ जी पास्ड ऑन बिफोर 3 years. I feel for you. So I was talking about two legends in the music world, स्पेशली इन इंडियन म्यूजिक की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली की बात कर लेते हैं, तो दो बहुत, एक फीमेल, माय दादी जी पास्ड ऑन इन 2018, लता जी एंड बप्पी दा। Simi ma'am, you're very active. You update yourself a lot. Fine, that's good. So Lataji and Bapida passed on recently. सो ये नहीं रहे हैं, तो इनके बारे में हम जब बात करेंगे तो यही बताएंगे कि दे पास्ड ऑन। पप्पी लहरी जी एंड लता मंगेशकर जी पास्ड ऑन। ठीक है, तो पास ऑन का पहला मतलब ये था, यानी किसी के डाय का। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो सकता है। पास ऑन, ठीक है, समथिंग, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पास ऑन समथिंग का क्या मतलब है? Pass on something. My friend's father passed on last month. So sorry to hear that. So pass on something, इसका मतलब है किसी को कुछ देना, आगे पहुंचाना। कोई चीज जो हमें किसी ने दी और हमने उसको आगे पहुंचा दी, इसको पास ऑन करना होता है। ये कोई न्यूज भी हो सकती है, ये कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, और ये कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक पैन है, मेरे यहाँ बगल में मेरे भाई बैठे हैं और उनके बगल में मेरी बहन बैठी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैन है वो मेरे भाई जो है वो मेरी सिस्टर को दे दे। तो ये किसके पास जाएगा? पहले भाई के पास। दिया किसने? मैंने। तो मेरे से भाई के पास, भाई से बहन के पास। तो मेरा इंग्लिश जो बनेगी वो ये है कि पास ऑन द पैन टू दीदी। ठीक है, सो ये ध्यान रखना प्लीज, पास ऑन द डिश। ये आप जब बोल सकते हैं दिव्यांशी मैम दैट, सो सॉरी टू हियर मोहित सर। सो आप ये बोल सकते हैं प्लीज पास ऑन द डिश। याद रखिएगा, अगर व्यक्ति डायरेक्टली आपको देगा तो वो ऐसा नहीं यूज नहीं होगा, उसके बीच में किसी के पास वो चीज होनी चाहिए जब वो चीज आपके पास आएगा। पास ऑन द डिश टू मी का मतलब समझ रहे हैं आप? पहले वो इंसान जो डिश लेगा वो किसी और को देगा, फिर वो चीज आप तक पहुंचेगी। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहने का मतलब आप समझिएगा, जैसे अगर मेरी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, माय फादर पास्ड ऑन द पेरेंटल प्रॉपर्टी टू मी, तो इसका मतलब है मेरे फादर को पेरेंटल प्रॉपर्टी कहाँ से मिली? मेरे दादाजी से, और दादाजी से पापा को, और पापा के बाद मुझे। और ऐसे ही अगर हम लोग करें, सो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में आपको पता है ना, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं,
बहुत सारे लोग तो कुछ नया ढूँढते हैं, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं मैसेजेस, और कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरवर्डेड लिखा आता है आजकल व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्डेड, तो इसका मतलब है किसी और ने उनको दिया और उन्होंने वो आपको दे दिया, समझ रहे? तो इसका मतलब है कि यू पास्ड ऑन द मैसेज टू मी, तो इसका मतलब है आपके पास ये मैसेज कहीं और से आया था, ठीक है? और आपने मुझे वो दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइन। सो मैं ये नहीं कह सकता जैसे ये पैन आपके पास है या आपके और मेरे बीच में कोई बीच में इंसान नहीं है, तो मैं वहां पे यूज नहीं कर सकता पास ऑन द पैन प्लीज, वहां पे मत यूज करिएगा, वहां पे पास ऑन द मोबाइल टू माई फ्रेंड, I pass on the pan to my friend. My friend passed on her friend's marriage news. So my friend passed on, बिल्कुल सही है. So my friend passed on her friend's marriage news to me. अगर आपको उन्होंने दी है, पास ऑन की है, तो आप टू लगा के उस इंसान का नाम लगा सकते हैं जिसको वो दी गई है, ठीक है? तो लोग मैसेजेस को पास ऑन करते हैं, तो मैनी पीपल पास ऑन द मैसेजेस, सो मैनी पीपल पास ऑन द रूमर्स, एंड दैट इज रियली नॉट गुड. रूमर्स का मतलब आई होप आप सबको पता होगा. हिंदी में जिन्हें हम अफवाहें कहते हैं उनको इंग्लिश में रूमर्स कहते हैं. सो देर आर सो मेनी पीपल दिस पास ऑन द रूमर्स. सो अगर मुझे लगता है कि ऐसा है, तो डोंट पास ऑन द रूमर, फाइन. डोंट पास ऑन एनी, क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसे आपने ढंग से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखी हो, बिकॉज इट डज हैपन ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक न्यूज़ पढ़ते हैं, कैरी अवे हो जाते हैं और फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उससे कितने लोगों को क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस ऑन माय बर्थडे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स पास्ड ऑन द विश टू मी. इट मीन्स आपने मुझे समझा दिया कि आपके जो एक फ्रेंड हैं उन्होंने आपको डायरेक्टली विश नहीं किया, आप तक विश भिजवा दी उन्होंने, पास ऑन करवा दी. क्या उससे को कह देना हैप्पी बर्थडे, दैट्स ग्रेट. देयर आर सम फ्रेंड्स लाइक दिस. तो ऐसे ही दोस्तों के लिए तो एक वर्ड यूज होता है ना. सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स पास ऑन द विश टू मी. सो याद है ना आपको लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था, इन नेम ओनली. सो आप बोल सकते हैं इन नेम ओनली फ्रेंड. सो please pass on this letter to your father. Fine. So let's talk about the next one. So the first one was buck for something. The second one pass on. इसका पहला मीनिंग टू डाई, और दूसरा जो मीनिंग है वो है किसी चीज को किसी और को देने के लिए. फाइन. एंड आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज नाउ इट्स एन ईडियम. अब जो यूज करेंगे वो ईडियम है, एंड दैट इज कॉल्ड पास द बक, ठीक है? अब देखो, no sir, I'm saying that she forwarded the message. Great. Fine. So pass the buck. Pass the buck. इसमें पासवर्ड भी है और बकवर्ड भी आ गया. अब इसमें ध्यान रखिएगा. ग्रेट. समटाइम्स सम, आप इनको याद रखिएगा, ऐसे लोगों को, इनके लिए आप लेजी बोन्स वर्ड यूज कर सकते हैं. माँ सुस्त इंसान कौन टाइप करेगा, फिंगर्स में पेन हो सकता है. एनीवेज, पास द बक इस पे आ जाते हैं. इट्स एन ईडियम. इंग्लिश में इसको यूज करते हैं अगर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम आपसे सपोज किया गया है कि आप वो काम करेंगे, और वो काम आप खुद ना करके वो काम किसी और पर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल रहे हो, तो इसको इंग्लिश में पास द बक कहते हैं, ठीक है? समझ लीजिए आप कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काम करना है, बट यू आर पासिंग इट टू समवन एल्स, इसको कहते हैं पास द बक, ठीक है? सो किस कैसे यूज करोगे? देर आर टू थिंग्स. अगर आपको डायरेक्टली किसी को मना करना है तो आप डायरेक्टली कर दो कि डोंट पास द बक. आपको दे रहा है कोई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको दे रहा है, आप जो मना कर सकते हैं, डोंट पास द बक टू मी, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल,
मॉम डैड ने अगर भाई को या अपनी सिस्टर को, हम में से किसी की सिबलिंग को अगर बोला हो कि भैया ये काम तुम कर लो, ठीक है, तुम्हें करना है सब्जी का, सब्जी लेके आनी है तुम्हें, और वो आपके भाई कह रहे हैं यार, यार मेरे को अपना एक वीडियो बनाना है यार, मुझे अपना वीडियो एडिट करना है, या तुम कर लो ये, तो आप उसे बोल सकते हो कि यार प्लीज डोंट पास द बक टू मी, ठीक है, सो डोंट पास द बक टू मी, ऐसा आप और बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, स्पेशली इंडिया के अगर हम सिस्टम की बात करें, सो यहाँ पे एक तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट है। तो समटाइम्स बहुत सारे जो काम नहीं होते स्टेट्स में, तो ये कहा जाता है कि स्टेट वाले जो होते हैं वो ये बोल सकते हैं कि अभी हमें तो आगे से फंड्स नहीं मिल रहे हैं, सो दे पास द बक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम नहीं है ये। सो समझ जाइए आप कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको करना है वो आप किसी और पे डाल रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड डोंट पास द, या सॉरी, पास द बक। फाइन, सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई सेंटेंसेस, आई एम प्रैक्टिसिंग। So now let's see your sentences. My sister always passes the buck to me when it comes to making tea. इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि ये वाले जो ग्रामर है प्रिया मैम, इट कम्स टू, ये जो टू है ये प्रपोजिशन वाला टू है, और इस टू के बाद हमेशा एक्शन प्लस आईएनजी वाली ग्रामर है। मानता हूँ कि बहुत सारे टू हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी लगती है एंड इट्स कंफ्यूजिंग, तो कुछ जगहों पे आप याद कर सकते हो, जैसे इस वाले रूल का आप याद कर सकते हो कि इट कम्स टू, तो आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। सो माय सिस्टर ऑलवेज पासेस द बक व्हेन इट कम्स टू मेकिंग टी। फाइन, दैट्स वेरी नाइस सेंटेंस, गुड। Waiting for other people to make sentences. So, yeah, now only 8 are left. So, no problem, 6 more minutes to see your answers. My some senior colleagues are passes. Simi ma'am sentences. Very nice. Thank you so much. लेकिन आर भी नहीं होना चाहिए ना, तो अगर आर लगा देंगे सो आईएनजी वाली ग्रामर बन जाएगी। तो सम, तो माय सम सीनियर कलीग्स, और जब आप माई यूज कर रहे हो तो फिर सम मत यूज करो, इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा सम ऑफ माई सीनियर कलीग्स या फिर सम, ठीक है, माई सीनियर कलीग्स, इसमें सम और माई एक साथ यूज नहीं होगा, क्लियर। सो सम ऑफ माई सीनियर कलीग्स पास द बक टू देयर juniors. Okay, I feel your pain. Why you always pass the buck when mom tell to wash the utensils? When mom tells, S lagega Mohit sir. When mom tells to wash the utensils. My elder brother sometimes passes the buck to me. My brother always passes the buck to me. Why does he do so? Have you ever asked why does he do so? My brother always passes the buck to me when it comes to bringing a glass of water for Bua. And I always say, because you are talking about life sentences. So, आपका sentence में said नहीं say होगा. And I always say that don't pass the buck to me. Now you can start saying this. आज से पहले आपने हिंदी में बोला होगा, है ना दिव्यांशी मैम, आज से आप हिंदी मत बोलना, ठीक है, आज से आप इंग्लिश बोलना, डोंट पास द बक टू मी। One of my friends passes the buck to me to making her diagrams. No, यहाँ पे प्रिया मैम वो एक्सप्रेशन है जो ना when it comes to वाली ग्रामर में, तो आपको ये सेंटेंस में अगर टू लगाना है टू मेक, तो इस वाले टू में आप दो दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो टू है ये इन्फिनाइट के लिए यूज करते हैं, तो इसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बिकॉज आप दो काम रीजन बता रहे हैं, तो टू यूज कर रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म। बट व्हेन इट कम्स टू वाला जो है उस वाले ग्रामर में आईएनजी लगेगा, और इसमें आप वो यूज नहीं कर रहे हैं फ्रेज, ठीक है। सो मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सम ऑफ माई सीनियर कलीग्स पास द बक टू द जूनियर्स।
आई डोंट पास द buck टू एनीवन समटाइम्स। ये जो समटाइम्स है कबीरा मैम, ये पूरा एक ही वर्ड होगा। सम एंड टाइम्स, इसमें दो अलग अलग वर्ड नहीं हो सकते। समटाइम्स मतलब कभी कभी, एक सिंगल वर्ड। समटाइम्स माई मॉम passes द buck टू माई फादर। oh I see, don't disclose, है ना? Do you pass the buck to anyone? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, it's a good question. So do you pass the buck to anyone? Yeah, sometimes, because he is always busy in mobile phone, that's why he is passes the buck to me. अब इसमें आपको याशी मैम क्या करना है? ही इज ऑलवेज बिजी इन मोबाइल फोन, ठीक है? So busy in, he is always busy with mobile phone. That's why he passes the bugs. Sorry, he passes the bug to me. ठीक है, तो इसमें is नहीं आएगा. So why he's always busy with mobile phone, and why do you do his work? You shouldn't. You can stop and say, why should I do your work? It's your work. Anyways, no problem. I shouldn't say anything. It's your family matter. But yes, you must have passed the buck to your younger brother. Past में अच्छी practice है. Sometimes I pass the buck to my mom. Sometimes. Thank you. So you passes, you के साथ passes नहीं आता. My God, there are three very uh, two very big mistakes. You know, the first, दिव्यांशी मैम यू के साथ passes नहीं आ सकता, पहली गलती. The buck to टिल्लो, और उसके बाद you pass, इसमें टाइम वर्ड क्या है? Do है, ना कि are. So aren't you नहीं हो सकता ना. You pass the buck to टिल्लो, don't you? I didn't pass the buck to anybody yesterday. Okay. So usually, do you passed? Sorry, do you pass the buck? So these are, well. So thank you. It's 10:30. Time to say goodbye. Nice being with you. Thank you so much for your time and your participation. Hope to see you tomorrow. Well, you must check it out, and I will start the session not at 9:50. I'll start the session just 1 or 2 minutes before 10 o'clock. So be on time. Thank you so much. That's all for today. Good night. Have a sound slumber. And if you're not at home, if you are not at home, for an example, अगर आपको लगे कि मैं घर पे नहीं हूँ अपने, तो आप मुझे बोल सकते हैं have a sound kip. Kip एक चीज़ का नाम भी है ना, so आप kip word use कर सकते हैं, have a sound kip. I passed the buck once in a blue moon. That sounds good. Welcome. So I need to go